Class 8, Chapter 1, Crop Production and Management. In the previous video, we studied that all living organisms require food to stay alive. Plants are autotrophs, they produce their own food, while animals are heterotrophs, they depend on plants and other animals for their food. So there are two sources of food, plants and animals. We also studied what is farming, different types of farming, how plants are grown and animals are raised in large areas for human use. And this branch of science is called agriculture. So agriculture is the largest occupation in our country. Today the topics that we are going to study are: what is a crop, how crops are classified on the basis of their produce and crop seasons, types of crop season and the crops grown in that particular season. So what is a crop? When a same type of crop is grown in a same place on a large scale, it is called a crop. तो जब हम एक ही प्रकार के या एक ही टाइप के प्लांट्स को एक ही जगह में बड़े एरिया पर उगाते हैं तो उसे क्रॉप्स कहते हैं. And the product which is obtained from a crop is called a produce. मतलब उस क्रॉप में से जो हमें यील्ड या फसल मिलती है उसे प्रोड्यूस कहते हैं. Now these crops can be classified either on the basis of the products obtained or on the basis of the season in which they are grown. Okay. So we know that crops are of different types. अलग-अलग types के crop होते हैं. There are cereals, pulses, vegetables, fruits, etc. तो इन crops को दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई किया गया है. एक तो crops में से प्रोड्यूस या फसल कौन सी मिल रही है और दूसरा कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो होता है. सो फर्स्ट लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड ऑल्सो अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम देम. सो फर्स्ट इज सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन क्रॉप्स. वी गेट सीरियल्स लाइक राइस, wheat, barley, maize, oats, etc. from cereal crops. These are the types of cereals that we get from cereal crops. Cereal crops provide us with carbohydrates and we get energy from carbohydrates. Carbohydrates में से हमें energy मिलती है जो cereals खाने से मिलेंगे. Next is pulses or legume crops. So we get pulses like peas, beans, gram, soyabean, lentil, etc. from legume crops. Legume crops में से हमें pulses जैसे कि peas, beans, gram, soyabean, etc. इस तरह के pulses मिलते हैं pulses crop में से. Okay. And the type of nutrient that we get from pulses are proteins. And proteins are necessary for healthy muscles and growth of our body. After that is fiber crops. Examples of fiber crops are cotton, hemp, jute, etc. These are the type of fibers that we get from fiber crops. Fiber crops provide us fibers for cloth. कपड़ा बनाने के लिए fiber crops में से हमें fiber मिलता है. उसके बाद है oil seed crops. The examples of oil seed crops are mustard, sunflower, groundnut, coconut, etc. And we get oils from oil seed crops. Oil seed crops में से हमें oils मिलते हैं. Oils are necessary for fats. Fats के लिए हमें ये oil seeds consume करने पड़ते हैं. Fats provide us with energy and heat during winters. उसके बाद है tuber crops. The examples of tuber crops are potato and tapioca. These are stems which are grown underground. ये underground उगने वाले crops हैं, ये soil के नीचे उगाए जाते हैं. They provide us with starch. Again, starch is necessary for energy. Next is sugar crops. The examples of sugar crops are beetroot and sugarcane. We get carbohydrates in the form of sugar from sugar crops. Next is root crops. Examples of root crops are
carrot, sweet potato, etc. So these are edible roots. They provide us with starch. We get starch from these root crops, and starch provides us energy. And apart from starch, root crops also provide us with vitamins, and vitamins are necessary for healthy eyes, bones, skin, blood, etc. Okay. Next are beverage crops. Examples of beverage crops are tea and coffee. We get beverages from beverage crops, which we take for refreshment. So this is how the crops are classified on the basis of their produce. Next, let us see how crops are classified on the basis of seasons in which they grow. So as we know that in India, there are two main crop seasons. इंडिया में क्रॉप्स उगाने के लिए दो मेन सीजन्स है, विंटर सीजन and monsoon season. So the crops grown in winter season are called rabi crops, and the crops grown in monsoon season are called kharif crops. विंटर में उगाए जाने वाले क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स कहते हैं और मानसून में उगाए जाने वाले क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं. Now because rabi crops are winter crops, they are sown in the month of October or November and harvested in March और April. मतलब राबी क्रॉप्स विंटर यानी ठंड के मौसम के क्रॉप्स है, इसलिए उन्हें अक्टूबर या नवंबर महीने में उगाए जाते हैं और उनकी हार्वेस्टिंग मतलब फसल की कटाई मार्च या अप्रैल महीने में की जाती है. और दूसरी तरफ खरीफ क्रॉप्स आर मानसून क्रॉप्स. दे आर सोन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर. तो खरीफ क्रॉप्स जो कि मानसून यानी कि बारिश के मौसम के क्रॉप्स है, इसलिए उन्हें जून या जुलाई मंथ में उगाए जाते हैं और उनकी हार्वेस्टिंग या फसल की कटाई सितंबर या अक्टूबर महीने में की जाती है. नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर wheat, mustard, barley, gram, pea, etc. And the examples of kharif crops are rice, maize, pulses, cotton, groundnut, etc. So these are the examples of rabi crops and kharif crops. इनको इन पर्टिकुलर सीजन में ही उगाए जाते हैं. अभी क्रॉप्स उगाने के लिए अलग अलग सीजन क्यों चूज करते हैं? So the thing is that Rabi crops do not depend on monsoon rains because their water requirement is very less. मतलब राबी क्रॉप्स को उगने के लिए कम पानी चाहिए, इसलिए इन्हें पानी के लिए मानसून रेन्स या बारिश की जरूरत नहीं पड़ती. ये क्रॉप्स ज्यादा पानी की वजह से खराब हो सकते हैं. That's why they are grown in winter season and harvested before monsoon in summer season. Next, kharif crops require plenty of water and largely depend on monsoon rains. मतलब खरीफ क्रॉप्स जो है उन्हें उगने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, तो ये मानसून रेन या बारिश के ऊपर पानी के लिए डिपेंड करते हैं. So they are grown in the onset of monsoon season and harvested in winter season. So these are the two seasons, winter and monsoon, on the basis of which crops are classified. So today we studied what is a crop, how crops are classified on the basis of their produce and crop seasons, types of crop season, and the crops grown in that particular season. In our next video, we'll study about basic agricultural practices.